So did we reach all these years of learning, all these years of, studying? Many of you were just finishing college, what I had heard from the previous chats, right? But did you reach where you are just overnight? No, we had to put in a lot of practice. Before your examinations, don't you study? What is that? That is also practice. So practice, practice, practice. In fact, let me share today's example. Do you think Kritika and I have come here just without any kind of practice? No. Even though we have years of experience behind us, that's something behind us. What we are here today is for all of you. So we have practice. Someone's written practice makes men perfect. Absolutely. Practice makes even women perfect. Practice makes us all perfect. So please, please, in your journals, write down that I must not stop from learning to practice. I must not stop myself from building up on the next step, right? Thirdly, let's see what we have here. I can see a girl doing self-talk. Do you think she's sad? Do you think she's got a body language which is drooping? I don't think so. So what does this indicate? That this indicates that she is happy. This indicates that she is very, very confident. In fact, she's winking to herself. That means she's really happy from within, from her own inner self, which is showing as a true self in that mirror. When you see and you start beginning to see your true self in the mirror, even if it's negative, it's all right. Note it down, pinpoint it, and start working towards it. Like we said, move step by step, right? I And so agree does with you. that come overnight? I don't think so, Nandini. But I think small steps at a time help. Why don't we give positive affirmations to all of us, to each other every single day? Why wait for a special day? Why not do it right now? So why don't all of you, जहां भी आप लोग बैठे हो, मेरे साथ बोलो, हम दौड़ेंगे, हम गिरेंगे, फिर हम उठेंगे, फिर हम चलेंगे, but हम अपने decisions लेंगे. Let us be the captain of our ship. तो जोरों के साथ हैंड रेज करते हुए बोलिए, आई एम द कैप्टन ऑफ माय शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माय फेट. आई वांट ऑल ऑफ यू टू जॉइन इन. और बोलने के बाद चैट में जाके कैप्टन टाइप करिए, बट बोलिए मेरे साथ, आई एम द कैप्टन ऑफ माय शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माय फेट. वंस मोर, आई एम द कैप्टन ऑफ माय शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माय फेट. एक बार और सब लोग बोलेंगे, आई एम द कैप्टन ऑफ माय शिप, आई एम द मास्टर ऑफ माय फेट. और ये बोलने के बाद सब कैप्टन टाइप कर दो, नहीं तो सी टाइप कर दो जल्दी से. Did you feel good? Did you feel enthusiastic? And Absolutely. if you tell this every single day of your life, you will be filled with confidence. ये positive affirmation है. जैसे नंदिनी ने बोला, हो सकता है हम लाइफ में नेगेटिव और होंगे, बट अगर हम अपने को हिम्मत ऐसे बनाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा. With this, let's move ahead. Absolutely. Like this one is saying you are capable. Isn't that true, Kritika? Yes, The moment yes. we start feeling, the moment we start behaving that we are capable, I think that's what it is. Yes, we have to give positive affirmations every single day of our lives. Okay. So we interpret things the way we want to. Isn't that very true? Like you started, Kritika, with your introduction. Let me rephrase those words. अरे ये तो मैं नहीं कर सकती. ओहो, आज ये कर सकूंगी क्या? या कर सकता हूँ क्या? मैंने ट्राई करा था, but यार I failed यार. Don't we say that as a very common sentence to our best friend? Yes. So what? So I'm already interpreting all the negative energies on my own self. No, no, no. We should not. We are not going to do it from today. And this is why we're holding this today. That we need to promise ourselves that there should be positive affirmations. We have to stop bullying ourselves and we need to interpret all the positive things. Interpreting positive things will help us think and move further.
So as an activity, okay, so let's not have a chat. Let's have a mic on, or let's have a camera on, and let's see which one of you can interpret this the fastest. So need to raise your hand and tell us. Are we ready? 10, 9, 8, start. Interesting. Can you be at time? Excellent. Who was that? Can you be? Chirag. Chirag. Okay. Chirag said, can you be at time? Okay. There's something missing, Chirag. Try it again. Can you be stand at time? Almost there. Almost there. Very nice. I think Chirag or Harsh ne sabse pehle answer diya hai. Good, good. Can you be Almost there there. at Try time? once more. Come on. Let's Soumya, try. I can see Soumya. Yes, Soumya. Can you be there at time? Almost there. Almost. Can you be run at time? Can you be ready at time? Can you be ready at time? Perfect. I think Alfez Sheikh has given the right answer. Applause. At Superb. least you all tried. That was amazing. Yes. This is what And it's they were called. almost. But I think Alfez gave the right answer. Baki sab log 80% there the. Nandini, that was a fun activity. Excellent. So the right answer is, let me rephrase it. Can you be ready at 5 o'clock? Right? The time is also mentioned, or can you be ready at time? Okay, that was fun. But let me come to a very important conclusion from this. That first and foremost, we need to believe in ourselves. No one will believe in you until you believe in yourself. If you respect someone and you trust them, then you respect them. So if you don't begin to trust yourself and respect, how will others do that? So for others to believe in you, first and foremost, you need to believe in yourself. Am I right? Absolutely. I'm sure many of you agree. So there are many reasons why people don't feel confident. I'm sure most of you know these answers. You try and be somebody that you're not. You criticize and you get affected more. Actually, you get more affected by criticism, which affects you. You don't have the skill. So what? You get affected by the painful past experiences. I'm sure many of us have it. That's all right. And you don't have supportive people around you. So what? Think, think, think. Practice, practice, practice. And stop bullying yourself. That's what it should be. That reminds me, Nandini, of something that happened with me. 12 years back, when I came in this profession, I got a big opportunity. एक मुझे बहुत बड़ा event मिला, organize करा गया था, communication skills करवाने के लिए. I'd love to share the story because बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो भी नया step लेने वाले हैं. And such things might happen to you. And जब मैं उस auditorium में गई, it was full. Almost a capacity of 400 to 450 people in that auditorium. And I had gone there with one of my colleagues. And she came rushing out to me. मुझसे बोला, कृतिका बहुत बुरा हाल है. मैंने कहा क्या हुआ? तुमको पता है हम लोग दोनों फ्रेशर्स हैं और वहां पे सारे PhD बैठे हुए हैं. Can you imagine? वो लोग PhDs हैं, 10-10, 15-15 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं. मैं उस समय पैनिक कर सकती थी, but मैंने कहा nothing to lose. Thankfully, I had a smile on my face and good support and I had the confidence. I told her. उस समय नंदिनी, let me tell you and the others, मेरी PhD नहीं हुई थी. अभी it is towards completion. So what happened was, I said to her, I smiled to her and I said, it's okay कि वो लोग PhDs हैं, मैं PhD नहीं हूँ, but मैं उनको communication सिखाने वाली हूँ, होंगे वो लोग PhD. And you know Nandini, what happened? उस एक event के बाद मेरी life change हो गई. इतने लोग, they came up with offers of taking sessions कि मैंने अपनी line change कर ली. I was teaching the MBA and I jumped into the soft skills train. And life has been uphill after that. Positive things, obviously setbacks आते हैं life में, but you don't have to compare yourself कि हम उसके जैसे नहीं हैं, हम जैसे हैं. We have to bring out the best self. Affirmations जैसे हमने करा, I am powerful, I can do it. Do that one thing that scares you. मैंने communication skills पे अपनी work करा every single day. 2 लोगों के सामने, 20 लोगों के group के सामने, फिर 50-60 लोगों के सामने जो opportunity मिली, I took that opportunity. इन क्रिटिक को क्वेश्चन करा, ये मुझ में कमी है, मे बी आई डोंट नो हाउ टू ड्रेस अप वेल, या एक फॉर्मल इवेंट में कैसे, आई ग्रूम्ड माई सेल्फ. एंड देन एज यू सेड, रिमूव दैट टी,
कभी भी अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमें किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, हम जाके उनसे बात ही नहीं करेंगे तो कभी बात ही नहीं होगी ना. व्हाट्स द पॉइंट? सो वी हैव टू, जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको हमें रोकना है. आई कांट अपनी डिक्शनरी से हटा के आई कैन करना है. एंड यस, व्हाट आई बिलीव इज सबसे हायर सेल्फ, it will get you good karmas. Always help out people, always. Like Nandini in this opportunity जब भी आई, I know मेरी तबीयत खराब थी, I was supposed to be in isolation, you came forward, you helped me out. Yes, this session को हमें strong बनाना है because बहुत सारे participants आने वाले, उनको हमें डिमोरलाइज नहीं करना है. अगर मैं नहीं बोल पाई, नंदिनी केम अप फॉर मी. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल. ओपन वालों ने भी हमारे साथ पूरा हमें सपोर्ट दिया इस चीज में. एंड हियर वी आर addressing this beautiful gathering, taking this wonderful session जो सिर्फ आपको शायद अच्छा नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है. With this, I move ahead. So we have some beautiful messages here, Kritika. It's from Vadhva Asta. If we are helping others and helping makes me happy, but when I need some help, sometimes they help or sometimes they don't. Kritika, I think you got your answer from the last line there, that it's your karma, darling. It is you who can Yes. do. Sorry, Astha, it's your karma. Do it. And do it to help your own self, because when you do that good deed, doesn't that make you feel happy? Doesn't it make you feel positive and confident that you've done it? So it's all about I, me, myself, Yes. when it comes to certain things. And also one more thing, हो सकता है जिसको हम हेल्प कर रहे हों वो हमें हेल्प नहीं करे इन रिटर्न में. ऐसा होता है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं. अरे मैंने उसकी मदद नहीं करना है. हमें क्या सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल. वो जो आपने नेकी करी है वो आपके पास 100 टाइम ज्यादा रिटर्न करके आएगी. हो सकता है उस पर्सन से बिल्कुल भी नहीं आए जिसकी आपने मदद करी हो, मगर 10 और लोगों से आएगी जिनको शायद आप जानते भी नहीं हो. ये होता है लाइफ में, ऑब्जर्व करना ये सबके साथ होता है. जिससे हम एक्सपेक्टेशन हो सकता है वो हमें रिटर्न में वो चीज वापस दे ही नहीं, बट हमें वहां रुकना नहीं है. हमें अपने हायर सेल्फ को और हायर लेके जाना है, बिकॉज वी नो गुड कर्मा. Kritika, sorry. So here we have Harsh, because the chat will go, so I had to interrupt. Sorry for that. Please, please. There's a message from Harsh that, ma'am, I think lots of things, but at last I stand at a point where I doubt my own decision. Don't know why. And Harsh, there's an answer. There's a message here by Soumya, written impossible, and then it's been changed to I'm possible. Does that answer what you've written? Come on, you don't have to be scared. If we all are scared, we would have never been where we are. I'm telling you with my experience, I have worked with little children for so many years. But when I saw parents who required that kind of help, I said, I need to step up. I need to upgrade myself for helping others. And that's what it is. Try it. Once you'll fail, twice you'll fail, third time you fail, but you'll reach it. And trust me, write it down today, write the date today, and do get in touch with us when you start taking those small steps. We'll be very happy to hear from you. So here it is. To be self-confident, you must know your strengths and weaknesses, like we're talking about it. Live in the now. Please forget about the past, and nobody knows the future. Have you seen the situation around us? So forget about it. Stop measuring your success and work on your own happiness. Set your goals. Take a diary. Write them down, like we have been emphasizing. So yes, we have a confidence booster challenge. हमने इतनी सारी बातें करी, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं that we are overwhelmed. I think आप लोग ये सब करते होंगे, but हम 3 कॉन्फिडेंस बूस्टर चैलेंजेस आपके सामने लेकर आए हैं. आप ये रोज करोगे फॉर द नेक्स्ट 20 डेज, और आपको जो ईमेल दिया गया है उससे आप हमारे साथ टच में आओगे और हमें बताओगे ये 20 डेज ये फॉलो करने के बाद आपको कैसा फील हुआ. फर्स्ट इज से इट, डू इट, बिल्ड योर विल पावर. अब ये कैसे करना है? हमें अपनी विल पावर बिल्ड करनी है, और जब हम अपनी विल पावर बिल्ड करते हैं और चीजें छोटे छोटे हम अपने टास्क अकम्प्लिश करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है. वो छोटी सी चीज हो सकती है, मैं 6 o'clock पे उठूंगी, मैं योगा करूंगी, प्राणायाम करूंगी, मैंने डिसाइड किया है, मगर अगर मैं वो नहीं करती हूँ तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ये तो करेगी ही नहीं. फिर जब बड़े बड़े डिसीजंस लेने का टाइम आता है, बड़ी बड़ी चीजें करने का, तो मेरे सबकॉन्शियस को माइंड को पता है ये तो कभी करती ही नहीं है, ये नहीं करेगी, वो आपको हेल्प नहीं करेगी. हमें अपने आप से बोलना है. आज मैं सुबह उठी, मैं इस रूम में बंद हूँ पिछले 8 दिनों से, बिकॉज
of course for the safety of others. मैं agitated हो सकती थी, मैं चिढ़ सकती थी, but मैंने कहा नहीं, let me do things which give me pleasure. मुझे room decorate करने का एक idea आया, books arrange करने का, I did that and it gave me positivity. तो मेरा confidence बढ़ा, ना कि मेरा morale down हुआ. Second चीज, take 100% responsibility. कब तक दूसरों को blame करोगे? मेरे parents ने मुझे English school में नहीं भेजा, हिंदी medium, क्या करूं मैं क्या करूं? मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मैं तो छोटे से गांव से हूं या विलेज से हूं या छोटे टाउन से हूं, मैं तो कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. बनाओ, अपने डिसीजंस खुद लो और उनपे भले ही आप गलत लो सही लो, से यू आर रॉन्ग यू आर राइट, बट आई एम टेकिंग माय ओन डिसीजंस. इससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी. सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इससे बेटर क्या हो सकता है? दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों को शेम करना, ये उंगली अपनी ओर मोड़ लो. जो भी डिसीजंस लो खुद लो एंड अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लो. दैट विल गिव यू सक्सेस. एंड द थर्ड पॉइंट, नंदिनी. Absolutely, I truly agree. In fact, Kritika, you must have heard of J.K. Rowling, right? Yes. How many times was her book not published and was she asked to be as a failure? Let them answer. I think Harry Potter 17 or 18 times I heard. उनको reject कर दिया गया था. And today, I think it's one of the best series from generation to generations, which has been coming on. So did she give up? No, she took 100% responsibility. She had strong willpower. And the third point which Kritika's, and I would like to share with you, is that people who surround us, like we've been talking about, the people who can put you down, the people who suck out all that energy and make you feel so negative, so low in life, so less confident and walk down. But those are the kind of people who you need to recognize. And I'm sorry to say, but yes, keep them at bay. They might have their own reasons, that's fine, but we need to find a reason within. So here, as a third confident booster challenge, please take a diary, write down and identify those people. You know, the parents also, they're not wrong, they fear, they want to protect you. They'll say, nahi, 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 mera bachcha ye nahi kar sakta, main ye kara dungi. Why? It's all right, because that's their role as a parent, but that's all right. You need to take responsibility. You need to build that power, and you need to identify such people and note down which things and which people are stopping me, and put a cross and a tick mark to something you want to achieve. Okay, so there are three things that you are going to do. एक after activity, रोज लिस्ट बनाओ क्या चीजें हमें करनी है और उन पे टिक लगाओ कि आज हमने accomplish करी. सेकेंड चीज, जो भी डिसीजंस ले रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये हमने करना है. एंड थर्ड, एज नंदिनी सेड, एक लिस्ट बनाओ उन लोगों की जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनकी एनर्जीज आपको लेनी है, उनके साथ रहना है. नेगेटिव करते हैं जो लोग, उनसे अभी के लिए थोड़ा डिस्टेंस, जब तक हम थोड़ा सा सक्सेसफुल और नहीं हो जाए, हम अपने थोड़े डिसीजंस बेटर नहीं लेने लगे. Agree, Nandini? Is this what we are telling them? Absolutely. So next 20 days आप अपने को ऑब्जर्व करोगे, अपना जर्नलिंग करोगे, और फिर कैसा आपको फील होता है 20 डेज के बाद हमारे साथ शेयर करोगे, जो आपको ईमेल आईडी मिला होगा या मिलेगा. विद दिस हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्कवर किया. इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे आप ये आइसबर्ग देखते हो ना, हम जो कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर, मेरी कम्युनिकेशन, ये एक छोटा सा पार्ट है जो आईक्यू होता है कि आपने बीएससी करा है, बीकॉम करा है, एमबीए करा है, आपकी पढ़ाई. पर जो चीज हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, हमें अपने को, खुद को समझना, दूसरों को समझना, इमोशंस मैनेज करना, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. और ये इमोशनल इंटेलिजेंस इज लाइक द रूट, द सॉलिड, जो सॉलिड ब्रांच है ना ट्री की. ये EQ हमारा अगर सॉलिड है ना, तो हम टीम वर्क में अच्छे होंगे, हम कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे होंगे, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होगा. पैनिक इवेंट मैनेजर्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना करना पड़ता है, एंगर मैनेजमेंट, हमें हमेशा स्वीट रहना पड़ता है लोगों के सामने, राइट? तो इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. खुद को जानना, खुद के साथ हमारे इमोशंस हम कैसे कंट्रोल करें, दूसरों को कैसे मैनेज करें, अगर दूसरा हमारे साथ गुस्सा हो रहा है तो हम उनको कैसे हैंडल करें, सोशली कैसे, इसकी भी कुछ छोटी छोटी ट्रिप्स एंड टेक्निक्स हैं. ओके, व्हेन वी आर वर्किंग विद अदर्स. Do you think, Kritika, that every day, every hour, every minute you have the same kind of emotions? No, not at all. Like you just shared an example that you locked up in that room, and you just shared there are times when you got anxious. There were times when you were getting angry.
And there were times when you just felt little low, right? So True. these are all emotions, and these are actually facts of life. These are very, very true facts of life, that even me as a person cannot have the same emotion even after 5 to 10 minutes. So why do we expect the same from others? True. So we need to be emotionally intelligent to try and understand that. Agreed. So if we control our emotions, we cannot always be like this. आप इस person को देखेंगे टेबल पे, आप हमेशा क्या ऐसे हो सकते हो कि Not at बिल्कुल all. हम काम हैं, हम क्वाइट हैं? क्या होता है नंदिनी ऐसे में? हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, right? What is how do we become emotional hostages? Because I think we hold our own emotions inside, or we Yes. just keep pouncing on that person. Yes, we keep pouncing. तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कौन सी चीजें हैं जो हमें ट्रिगर करनी है, उस समय हमें रोक देना है. जो चीज मेरा एंगर ट्रिगर करती है, मुझे उस समय उसको स्टॉप बोल देना है, और उसकी जगह मुझे अपने हैप्पीनेस क्वोशिएंट को बढ़ाना है. तो जब मैं ये प्रैक्टिस करूंगी, जैसे आपने बोला था प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो जब मैं अपनी उस हैप्पीनेस वाली चीज एस्पेक्ट को प्रैक्टिस करूंगी, तो मैं अगली बार जब वो मेरे सामने ट्रिगर आएगा, तो आई विल नॉट बी एंग्री. इनफैक्ट आई विल टेक इट इन अ वेरी लाइट वे. हमें इमोशनल होस्टेज नहीं बनना है. दैट इज व्हाट इज बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इज ऑल अबाउट. उसके अलावा हम छोटी छोटी चीजें जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो है फर्स्ट, ब्रेक द हैबिट. ब्रेक करो, जैसे मैंने कहा, ऑब्जर्व करो कौन सी चीज आपको ट्रिगर करती है, उनको रोक दो. The law of habit says कि आप दो इमोशंस एक साथ नहीं कर सकते हो. अगर आप गुस्सा हो तो आप उसी मोड में चले जाओगे, उसी ओर फ्लो कर जाओगे. अगर आप खुश होते हो स्माइलिंग फेस के, तो आप उस ओर मुड़ जाओगे. तो हमें अपने को किस ओर मोड़ना है? हमें अपने को हैप्पीनेस वाली ओर पर मोड़ना है. एंड द सेकंड पॉइंट इज यूज द गोल्डन वर्ड्स. हम कितनी बार लोगों को प्लीज बोलते हैं, सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं. कितने लोगों को हर्ट किया है? नंदिनी, क्यों ना आज इन लोगों को एक और एक्टिविटी दी जाए. जिसको भी आपने पिछले वीक में कुछ भी बुरा बोला है, आपकी मम्मी को, फादर को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, किसी को भी, आप उनको सॉरी बोलोगे. आज इस सेशन के बाद जाके सॉरी बोलोगे और थैंक यू बोलोगे. जब हम लोगों के साथ ऐसे कनेक्शन बनाते हैं, सॉरी बोलते हैं और मीन इट, जस्ट डोंट से इट, मीन इट. अपनी मम्मी को थैंक यू बोलो. आप 11 बजे 11:30 बजे ब्रेकफास्ट करके इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, वो आपके लिए लंच या डिनर, लंच की तैयारी कर रही है. गो एंड से थैंक यू टू हर दैट आप ये अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पा रहे हो. रिमेंबर, नो इमोशन इज बैड. हमें सिर्फ इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, अपने उस इमोशन को हैंडल करना सीखना है. Yes, I Nandini. truly agree. I think learning to deal with our emotions is one of the biggest challenges one can face. There's a saying, right, that count till 10 before you pounce on or you say something to somebody else. There's a reason. That counting helps us to rethink. So like Kritika and I had shared this beautiful image, now we hope that you know where you see yourself. So get down those journals. Please believe in those. Please believe in yourself and stop bullying yourselves. So can you give a last tip to everybody, Nandini, about how they can also, since ये लोग सब event वाले लोग हैं, what all steps they can take? Absolutely. So this slide is a bonus from both of us. Do you know today that why we both are wearing black? And in fact, even Ankita is wearing black. Anybody wants to write an answer there? Well, that's a tip from us as even image consultants, that black is one of the most authoritative colors, and in the color category, it's considered at the highest level. Even in a professional environment, somebody's written black is a dominant color. Absolutely. It is a dominant color, and professionally, it leads to the highest level. But do you know that we are not wearing a third layer? That means we're not wearing a jacket. Why? Because we want to feel approachable. We wanted to be approachable. We've also addressed the session in Hindi and English so that we could reach out to everybody and make them feel comfortable. So we were intelligent emotionally. We had self-confidence, and here we've dressed up as our first impression. Have you heard the saying, first impression is the last impression? You will never get a second chance to make that first impression. In fact, first impression is not only based on clothes, it is an amalgamation of everything.
It also has etiquettes, it has body language, it has a good grooming and dressing sense, and of course, what we have spoken about. So you have a lot of food for thought, and hope you've enjoyed our session thoroughly as much as we have enjoyed interacting with all of you. And next time we want to see you well dressed, feeling confident with the cameras on. Over to you, Kritika. Thank you, Nandini. On that note, this is the end of our session. I know दो तरह के लोग हैं यहाँ पे. कुछ लोग बोल रहे होंगे ये हमें पता है, ये हमें मालूम है, ये तो हम सुन चुके हैं. But कुछ लोग होंगे जो ये बोलेंगे, वाओ ये हमें पता था, वापस हमने सुना, बट अब हम क्या स्टेप लें, अब हमें क्या एक्शन लेना है, क्या मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, क्या मुझे और सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस और इमेज की क्लासेस चाहिए जैसे मैं अपनी पर्सनालिटी और ग्रूम कर सकूं. सो ऑन दैट नोट वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आप इस सेशन से पूछना चाहते हैं. वी हैव another 5-10 minutes and we are ready to address your questions. You can put your questions in the chat box and then it will be over to Ankita.